first thing is what? Very first important thing is what is the meaning of the word trigonometry. First we'll understand this meaning and then we'll start the another part of the trigonometry. So what is the trigonometry? Trigonometry is made up of the two words. First is trigon and second is metron. Okay, so what is meant by trigon? Trigon means what? Trigon means a triangle. And what is meant by metron? It is a measurement. So trigon means sides of a triangle here, and we are just measuring the sides of a triangle in the word trigonometry. So the meaning of the word trigonometry means what? It is the measuring of the sides of a triangle. Okay, so the meaning of trigonometry, it means what? The measuring the sides of a triangle. So one more thing is important related with trigonometry is what? See, this trigonometry is not only the current branch, but it is used by our ancient people also. Okay, आपको Egypt's के pyramid पता होंगे. Okay, so the people have used this knowledge of trigonometry to build the huge structures. Okay, in ancient time. सो ये जो ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज है हमको ही नहीं है, अभी अभी ये नॉलेज हमको मिला है, हिस्सा भी नहीं है. हमारे जो पूर्वज थे उनको भी ये नॉलेज था और उन्होंने भी ये नॉलेज जो है वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज जो है यूज किया है. ओके, सो द इजिप्शियन यूज अ प्रिमिटिव फ्रॉम of trigonometry for building the pyramids in the second millennium BC. Okay, and who discovered this ट्रिग्नोमेट्री? हमको ये सवाल बार बार आता है कि किसने ये ट्रिग्नोमेट्री ढूंढ के निकाला, हमारे दिमाग को टेंशन दिया. Okay, see, without the knowledge of trigonometry, we cannot build the huge structure. We cannot build the buildings. We cannot build the roads. We cannot build the pools. Okay, see, this is a very important concept in the mathematics also and use in the other technical subjects. Okay, so the Greek astronomer Hipparchus, okay, so formulate the general principle of the trigonometry, and that's why he is known as the founder of the trigonometry. He is actually the founder of trigonometry, and it is called also called as a god of the trigonometry because he just formulate all the things in the trigonometry. Okay, trigonometry में जो भी है वो उन्होंने अच्छे से ढूंढ के निकाला है और इसके वजह से हमको ये नॉलेज अभी तक आया है. और उनको जो एस्ट्रोनॉमर है we just called him as a. So next thing, let us discuss what is, let us see what is the what are the trigonometric ratios. Okay, so there are 6 ratios, you should have to know about them. Okay, and how we just use them to find the length of the sides of a triangle. Okay, so trigonometric ratio, consider the right angle triangle. See here in this right angle triangle, see AB is what it is. If we see that triangle ABC, it is a right angle triangle. Why? It is this B is a 90 degree. ओके, राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो बी है वो 90 डिग्री का है और इसलिए एक एंगल अगर 90 डिग्री का हुआ तो दैट इज कॉल्ड एज अ, वी जस्ट कॉल्ड इट एज अ राइट एंगल ट्रायंगल. एम आई राइट? नाउ हियर वी जस्ट टेक अ नोटेशन फॉर सी. सी इज कॉल्ड एज अ एंगल थीटा. ओके, ये जो सी है ये इसका मेजरमेंट कुछ तो भी थीटा होगा ऐसा हमने लिया. सो सी, इफ यू सी फ्रॉम थीटा, व्हाट विल यू सी? Okay, AB is there, so the opposite side of the theta is what? AB जो है वो C की जो means theta है उसकी opposite side है. What is the adjacent side? BC is the adjacent side. And what is the hypotenuse? AC is the hypotenuse. So very first thing that we know about the sine is what? Sine theta is equal to opposite side upon hypotenuse, means AB upon AC. Okay, now what is the cos theta? Cos theta means adjacent side upon hypotenuse. ओके, ये सब रिजल्ट्स आपके बेसिक स्टैंडर्ड में हो चुके हैं. आई जस्ट रिवाइज ऑल दैट थिंग सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम द बेसिक स्टैंडर्ड. ओके, ये जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ये हम डिटेल में नहीं देखने वाले. आपके दिमाग को थोड़ा सा मैं फिर से वो जो है दिमाग में आपके छुपा हुआ वो बाहर निकालने वाला हूँ, बाकी कुछ नहीं. ओके, ऑलरेडी यू हैव दिस नॉलेज. Okay, just we revise that knowledge so that we can use the trigonometry in the engineering mathematics. Understand? Okay, so sine cos हो गया आपका. next है tan theta. Tan theta is opposite side upon hypotenuse, so this is your opposite side upon, sorry, tan theta is opposite side upon adjacent side. So if you see
tan is a ratio of sine and cos. Tan theta is nothing but sine theta upon cos theta. And from these three basic ratios, we can also derive some another ratios, another three remaining ratios: sec, cosec, and cot. They are the reciprocal of this sine, cos, and theta. Okay, so this cosec theta is 1 upon sine theta, sec theta is 1 upon cos theta, and cot theta is 1 upon tan theta. See this, cosec is a reciprocal of sine, sec is a reciprocal of cos, and tan is a reciprocal of cot. Okay, or they are reciprocal of each other, they are opposite of each other, actually reciprocal of each other. If we take their product, you will get 1. Reciprocal means what? If you take a and b are reciprocal of each other, it means what? Their product is 1. Means a with respect to multiplication. Okay, so a is equal to 1 upon b. It means what? B is a reciprocal of a. Same here, see, cosec theta is 1 upon sine theta. It means what? Sine theta is a reciprocal of cosec theta, and same cosec theta is a reciprocal of sine theta. Okay, in this way you can remember these formulas, these results, to find out the values of sides of a triangle. देखो इधर आपको एक इस ट्रायंगल में से कौन सी भी साइड का लेंथ अगर पता है, so you can automatically find the side length of the remaining sides if you know this triangle angle also theta, isn't it? Okay, so the next is what? Signs of a trigonometric function in a different quadrant. This is very confusing part in the trigonometry. कौन सा जो रेशियो है, कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव है, ये बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करता है, बिकॉज दिस इज द पार्ट वी यूज डेली इन द मैथमेटिक्स. ओके, अदर टॉपिक्स में भी ये यूज करते हैं हम. सो ये समझ में अच्छे से आया तो आपको वहाँ दिक्कत नहीं होगी. सो लेट अस अंडरस्टैंड इन वेरी डिफरेंट वे. ओके, जो फॉर्मूलेज है उनको देख के थोड़ा सा हमको डर लगता है, तो लेट अस यूज द अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन अ डिफरेंट क्वाड्रेंट. ओके, ये जो एक स्टेटमेंट है, आप सबको कॉफी तो अच्छा लगता होगा मेरे ख्याल से. यस, ओके, चाय बहुत ज्यादा लोग पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं. कॉफी शॉप में जाते हैं हम सब फ्रेंड्स मिलकर, ओके चलो मुझको कॉफी पिला दो. तो ये कॉफी को लेके हम एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे. कॉफी बनाने में थोड़ा सा शुगर भी लगता है. ओके, तो हम शुगर कॉफी में थोड़ा सा शुगर ऐड कर देते हैं. लेट अस टेक दैट स्टेटमेंट, ऐड शुगर टू कॉफी. ओके, अभी क्या करना है आपको? चार क्वाड्रेंट कंसीडर करने. ये स्टेटमेंट लिख लिया, चार क्वाड्रेंट कंसीडर करने. फर्स्ट कंसीडर द फोर क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. दिख रहे हैं सब चारों क्वाड्रेंट. ओके, अभी देखो ये जो ऐड का ए है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आना है आपको. ऐड में से जो ए है ना, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आओ. जस्ट ब्रिंग दैट ए इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ए मींस व्हाट? all ratios. A means what? All ratios are positive in the first quadrant. It means what? All ratios are positive in the first quadrant. All means sine, cos, tan, sec, cosec, cot. सभी के सभी रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है. ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, कोई भी नेगेटिव नहीं है, वॉट एवर द एंगल. ये आपको समझ में आ रहा है? ओके, लेट अस टेक द सेकेंड वर्ड, शुगर. शुगर का एस लेना है आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में. लेके आया मैं एस सेकेंड क्वाड्रेंट में. अभी एस क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका साइन. ओके, जो 6 रेशियोज है हमारे पास, 6 रेशियोज वी हैव, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, टैन. सो एस का साइन लेना है, सेक नहीं लेना है. ध्यान में रखो, बेसिक जो रेशियोज है वो लेने हैं हमको. बेसिक रेशियोज कौन से आपके? साइन, कॉस एंड टैन. ये 3 बेसिक रेशियोज है, और बाकी के जो 3 है वो उनके रेसिप्रोकल्स है. आया समझ में? ओके, शुगर में से एस लिया मैंने. एस स्टैंड फॉर साइन. Okay, so therefore what is the positive in the second quadrant? Sine and its reciprocal cosec. ये दोनों ही सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव है, बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव होगी. ध्यान में रखो. ओके, अगर मुझको फाइंड करना है व्हाट इज द cos, व्हाट इज द cos 100, इट शुड बी नेगेटिव, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है 100 और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है. अगर मैंने फाइंड किया है sin 100, उसका वैल्यू पॉजिटिव रहेगा जो भी रहेगा, कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव. अभी मैं क्या करता हूँ? तीसरे वर्ड की तरफ आता हूँ. कौन सा है? टू. टू का मैंने टैन लिया तीसरे क्वाड्रेंट में, और टैन क्या रिप्रेजेंट कर, टी क्या रिप्रेजेंट करता है? टैन रिप्रेजेंट करता है. सो इन द थर्ड क्वाड्रेंट टैन एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉट आर पॉजिटिव, अदर्स आर नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे. और अभी मैं क्या करता हूँ? जो लास्ट वर्ड है कॉफी, कॉफी में से सी लेता हूँ लास्ट क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में. ओके, तो अगर ये सी क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉस एंड इस रेसिप्रोकल सेक,
these two ratios are positive in the last quadrant, fourth quadrant, and another all ratios are negative. आया समझ में? अगर इसका सब समरी निकालते हैं हम, देखो स्टेटमेंट ध्यान में रखना बहुत इजी है। ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड में से ए लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। एस में से शुगर में से एस लेना है, एस स्टैंड फॉर साइन, sin and its reciprocal cosec is positive in the second quadrant. Then 2 में से t लेना है, t stand for tan, tan and its reciprocal cot is positive in the third quadrant, others are negative. And coffee में से c लेना है, c stand for cos and its reciprocal sec are positive in the fourth quadrant, others are negative. ओके तो इससे हमको जो मिलता है देखो समरी। सो व्हाट इज समरी? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। In the second quadrant, what we get, sine and its reciprocal cosec are positive. In the third quadrant, sec, tan and its reciprocal cot are positive. And in the last quadrant, means fourth quadrant, cos and its reciprocal sec are positive. आपको कुछ ध्यान में नहीं रखना है, add sugar to coffee, ये एक ही स्टेटमेंट अगर आपने ध्यान में रखा तो आपको सब साइन ध्यान में आ जाएंगे। डू अंडरस्टैंड? ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, ऐड शुगर टू कॉफी, इतना ही आपको ध्यान में रखना है, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं है। और चार क्वाड्रेंट आपके दिमाग में रखो, आपके आंखों के सामने तुरंत आ जाएंगे। ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है, एस सेकेंड क्वाड्रेंट में रखना है, टी थर्ड क्वाड्रेंट में रखना है, सी फोर्थ क्वाड्रेंट में रखना है। उसके रिगार्डिंग जो है रेशियोज वो आपको पॉजिटिव मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली। Understand? Okay, so this is about the science of trigonometric ratios in the different quadrants. Okay, let us move to the next, trigonometric functions of special angles. Specific angles means this is also very important, क्योंकि क्या होता है हमको एग्जाम्पल में sin 90 तो हम सोचते बैठते हैं कि sin 90 की वैल्यू क्या होगी, cos 30 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये फॉर्मूलीज रहते हैं, फॉर्मूलीज we should have to use all these values in the subjects, technical subjects also. Okay, we have to find the values of specific angles. Okay, no doubt you have the calculator, आपके पास कैलकुलेटर होता है, साइंटिफिक कैलसी होता है, उसके उसमें आप तुरंत डालते हो और आ जाता है आपको। सपोज इफ यू डोंट हैव द कैलकुलेटर, आप लेना ही भूल गए, फ्रेंड्स में नहीं दे रहे आपको एग्जाम में, तो क्या करेंगे? और टीचर क्लास में पूछ लेते व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90, तो हम सोचते रहते जल्दी से कैलसी निकालते, उतने में दूसरा आंसर बता देता है। Okay, so see, try to understand the meaning of the trigonometric functions and the values of that ratios, that function of the specific angles. Specific means 0 को क्या होगा, 30 को क्या होगा, 45 को क्या होगा, 60 को क्या होगा, 90 को क्या होगा। अभी हम यही देखने वाले हैं, स्पेसिफिक 0 यानी 360। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। क्या करना है आपको, 0 से लेके 4 तक नंबर रिमाइंड करने, 0 1 2 3 4 ये ले लिए मैंने। अभी क्या करो, जस्ट डिवाइड ऑल ऑफ देम बाय 4, 4 ने डिवाइड करना है सबको, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अभी देखो ये क्या होगा, 0/4 इज 0, okay, 1/4 is 1/4 as it is, 2/4 is 1/2, 3/4 as it is, and 4/4 is 1। okay, अभी क्या करना है आपको, टेक अ स्क्वायर रूट ऑफ ऑल दीज नंबर्स इन अ सेम सीक्वेंस। स्क्वायर रूट लेना, 0 का स्क्वायर रूट 0 आएगा, 1/2 का स्क्वायर रूट इट इज 1/4, square root of 1/4 is 1/2, square root of 1/2 is 1/√2, square root of 3/4 is 3/√3/2, and square root of 1 is 1। तो ये आपको 5 नंबर्स मिल गए, कौन से वी हैव नाउ 0, okay, so 1/2, now 1/√2, √3/2 and 1। okay, and if you see these are all the values of sine function, okay, for the angle 0, 30, 45, 60 and 90। got it? Okay, so these are the values of for the sine ratio of 0 degree, 30 degree, 45 degree and 60 degree, 90 degree। अगर आपको एक साइन के सब वैल्यूज पता है, सो ऑटोमेटिकली यू कैन फाइंड ऑल द वैल्यूज। अगर आपको साइन फंक्शन के वैल्यूज पता है, ये
ये सब पांचों एंगल्स के लिए तो ऑटोमेटिकली यू कैन फाइंड द वैल्यूज फॉर द अनदर रेशियोज आल्सो. हाउ? लेट अस सी. ओके, सो ये जो देख रहे हो टेबल आप, इसमें से साइन का दिया है. देखो साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 30 मींस पाई बाय 6 in the radian, this is in the degree, this is in the radian. So sin theta is means sin 30 is 1 upon 2, sin 45 is 1 upon root 2. I have written all that value in this same sequence: 0, 1 by 2, 1 upon root 2, root 3 by 2, and 1. And 0, 30, 45, 60, 90. ऐसे. Okay. Sine 45 is 1 upon root 2. Sine 60 is root 3 by 2. And sine 90 is 1. Cos के लिए आपको क्या करना है मालूम है? ये सब वैल्यूज रिवर्स लिखना है. मीन्स ये जो लास्ट का 1 है ये पहले लिखना है. रूट 3 by 2 ये सेकेंड लिखना है. रूट 1 upon root 2 एज इट इज आएगा. 1 by 2 ये नीचे लिखना है सेकेंड लास्ट, और 0 लास्ट. just reverse the order, you will get the values of sine and cos automatically. अभी आप पूछेंगे सर tan sec cosec cot के कैसे फाइंड करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है. ये नेक्स्ट टेबल देखेंगे. इस टेबल में देखो अभी साइन के सब वैल्यूज मिल गए, कॉस के भी मिल गए हमको. अभी क्या करना है, tan के वैल्यूज पता करना है. हमको पता है tan मींस व्हाट, sin अपॉन cos, तो इनका डिवीजन कर लो. 0 upon 1 is 0, 1 upon root 2 upon 3, root 3 upon 2 is 1 upon root 3, 1 upon root 2 upon 1 upon root 2 is 1, root 3 by 2 upon 1 by 2 is root 3, and 1 upon 0 is not defined. Infinity. आपको खाली उनका रेसिप्रोकल लेना है. tan मींस sin अपॉन cos, तो ये दोनों का डिवीजन करके ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा. व्हाट इज कोसेक थीटा? कोसेक मींस व्हाट, ये साइन का रेसिप्रोकल है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो खाली. ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है साइन का जो टेबल है, साइन का जो रो है उसका रेसिप्रोकल ले लो कॉस के लिए. मींस 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 upon 0 is infinity. 1 by 2 का रेसिप्रोकल 2 आ जाएगा. 1 upon root 2 का रेसिप्रोकल root 2 आ जाएगा. root 3 by 2 का रेसिप्रोकल 2 upon root 3 आ जाएगा. और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा. सेक के लिए cos का रेसिप्रोकल ले लो, और cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल है. Yes, so in this way you can construct this table. It is very simple to understand and it is very simple to construct without knowing any trigonometric or any mathematical formula. You can derive all the uh, signs, all the values of the trigonometric functions. Got it? Okay, so these are the specific trigonometric functions of some specific angles. Okay, hope you understand all these concept. So next topic को जाते हैं हम, signs of a trigonometric functions in the different quadrant. Okay, so here let us see some examples on that specific एंगल्स. ओके, इवेल्युएट द फॉलोइंग. ये जो है हमको टेबल का यूज करके ये फाइंड करना है. cos 30 इंटू cos 60 प्लस sin 30 इंटू sin 60. ये आप कंपाउंड एंगल का रिजल्ट भी यूज करके फाइंड कर सकते हैं, पर हमको अभी कंपाउंड एंगल का फॉर्मूलाज वी डोंट नो एक्चुअली द व्हाट आर द फॉर्मूलाज रिगार्डिंग कंपाउंड एंगल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सो वी हैव टू डिस्कस देम एट द last in the last of this video. Okay, so just take the cos 30. What is cos 30? We have, see, cos 30 is root 3 by 2, cos 60 is 1 by 2, plus sin 30 is 1 by 2, sin 60 is root 3 by 2, and if we solve this we'll get root 3 by 2. Okay, so 2 into 2 is 4, 2 into 2 is 4, 2 times root 3 by 2, 2 4 get 4 by 2 is 2, and therefore it is root 3 by 2. Okay, so in this way we will get the values. Another example is there. Okay, find the values of cos 4 cos cube 45 minus 3 cos 45 plus sin 45. What is the value of this? Okay, so cos cube 45 means cos की value डालनी है आपको. What is the value of cos 45 and take the cube of that in this way. 4 into cos 45 is 1 upon root 2 its cube minus 3 as it is, cos 45 is there 1 upon root 2 plus sin 45 is 1 upon root 2. Okay, just simplify this. Take the cube of 1 upon root 2. Okay, and if we take this addition, 3 upon root 2 plus 1 upon root 2 is minus 2 upon root 2, and 1 upon root 2 its cube is nothing but what, 1 upon 2 root 2. See, this is very simple calculation. I am not going in detail about this. I just take this example only for understanding of the table.
ओके, दिस इज नॉट द अनदर मीनिंग। देखो ये जो ऐसे एग्जांपल्स होते हैं ये बहुत बार गेट में भी आते हैं आपको, अदरवाइज कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट में भी आते हैं कि ऐसा ऐसा जो इक्वेशन है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, फोर ऑप्शंस होते हैं इनके। सो देयरफॉर इफ इन द लास्ट इफ वी सॉल्व दिस विल गेट जीरो। इन दिस वे वी कैन इवैल्यूएट, इन दिस वे वी कैन find the values of the trigonometric functions. Okay, with the help of table also, science trigonometric functions of special angles. Okay, let us move to the next concept, fundamental identities. These three identities are very important. Let us discuss them one by one. Your first identity is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Your second identity is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, where theta is not equal to pi by 2. Okay, and the last thing is what, it is 1 plus cos square theta is equal to cosec square theta, where theta is not equal to 0. These are the three identities. It is very simple to understand. Okay, देखो अगर आपको first identity if you know, then automatically you can understand the remaining two identities also. Okay, ये आपको क्या करना है, जो जो first identity है उसको cos ने divide करो। ओके, अगर आप cos से डिवाइड करते हो तो क्या क्या होता है, देखो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। सो ये जो है cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ओके, और sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 अपॉन cos स्क्वायर मींस sec स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसको cos स्क्वायर ने डिवाइड करते हो, you will get automatically the second identity. The same thing for the third identity, divide equation 1 by, divide the first identity by sin square theta, you will get the third identity. आपने सिर्फ cos square theta और sin square theta ने डिवाइड करना है, आपको रिमेनिंग टू आइडेंटिटीज मिल जाएगी। इट इज वेरी सिंपल। ओके, और एक एग्जांपल भी देखेंगे हम इसके रिगार्डिंग, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी एग्जांपल होते हैं बहुत सारे आपके गेट में और इन द अदर टेक्निकल examples also. Okay, so let us see the example. Prove this: cos raised to 6 theta plus sin raised to 6 theta is equal to 1 minus 3 sin square theta into cos square theta. Okay, so LHS consider कर लेते हैं उसके पहले। So we know the result from the algebraic function. Okay, it is a cube plus b cube is equal to a plus b cube minus 3ab into a plus b. ओके, ये जो बेसिक फॉर्मूला है आपको पता होगा, ये हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सो हियर फर्स्ट cos क्यूब थीटा प्लस sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू, सो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ब्रैकेट रेज टू क्यूब, ओके, माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा इनटू a प्लस बी। a मैंने लिया है cos स्क्वायर थीटा, b मैंने लिया है sin स्क्वायर थीटा। Okay, cos square theta plus sin square theta. So here we have used the identity only. So this one sin square theta plus cos square theta, its value is 1. Okay, so again here I have used this identity 1, 3 sin square theta into cos square theta into 1. Okay, दोनों जगह पे मैंने वैल्यूज डाली है और it is same as RHS. इसको सिर्फ मैंने ये जो है cos raised to 6 theta is nothing but cos square theta raised to 3 ऐसा किया है, रेस टू 3 a रेस टू m रेस टू n का फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। ओके, सो दिस इज द वेरी बेसिक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ दिस fundamental identities of the trigonometry. Okay, so let us come to the next topics, trigonometric functions of compound angle. This is also the very important topic from the trigonometry. What are the trigonometric functions of compound angle? Compound angle means what? दो एंगल का कॉम्बिनेशन, कंपाउंड एंगल। कंपाउंड स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन होता है, वैसे ही कंपाउंड एंगल दो एंगल का कॉम्बिनेशन होता है। सो हियर सो a प्लस बी, a माइनस बी, like this. Cos, what is the formula of sin a plus b? What is the formula of cos a plus b? Sin a minus b, cos a minus b, like this. See, these are the formulas we are going to use here. Okay, so for any two angles a and b, first formula that we have is cos a minus b is cos a cos b plus sin a sin b. There are the
proofs, some steps in the some step, okay, in your basic level basic standard books also, इनके proof भी आपको देखने को मिलेंगे हम यहाँ पे. We are not going to discuss the proofs of all these identities, all these formulas. We just try to understand the formulas, how we use that also, okay, and so that we just understand the meaning of trigonometry and its uses in the another topics of mathematics and technical subjects. So first formula is cos a minus b. देखो ये कैसे ध्यान में रखना है, cos a minus b is cos a cos b plus sin a sin b. और सेकेंड फॉर्मूला पे देखो cos a plus b, cos a cos b minus sin a sin b. खाली अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे प्लस हुआ तो यहाँ पे माइनस होता है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ cos a cos b and sin a sin b, cos a minus b cos a plus b. ओके, सो डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूलेस भी है ये, इनके इनका ही यूज करके हम वो देखने वाले हैं. सो वी विल डिस्कस इन द अनदर लेक्चर आल्सो. So next is sin a plus a minus b, sin a cos b minus cos a sin b, and sin a plus b is sin a cos b plus cos a sin b. यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है. और नाउ फॉर द साइन इट इज sin a cos b माइनस cos a sin b. यहाँ पे sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b. सेम है, only the change of sign. If it is minus then minus is here, if it is plus then plus is here. cos के लिए cos a cos b, sin a sin b है, और sin, and for the sin it is sin a cos b cos a sin b. The combination is sin a cos b cos a sin b, same, only the change of sign is there. And the last formula is for tan a plus b, it is tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. If it is minus here, okay, then what, tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. This is the only change uh, in this formula. Got it? So these are the trigonometric functions of compound angle. These formulas are also very important. So let us see the example with that will help to we will help actually the compound angle trigonometric functions of compound angle here to understand to or to solve this example. What is the value of cos 15? See here what we do, cos 15 is nothing but cos 45 minus 30. आपको पता होगा. अभी cos a minus b हो गया, cos a minus b का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने यूज किया, cos a cos b plus sin a sin b. a means 45, b means 30. Okay, so cos 45 cos 30 plus sin 45 sin 30. Cos 45 का वैल्यू it is 1 upon root 2, cos 30 is root 3 by 2, plus sin 45 is 1 upon root 2, sin 30 is 1 by 2. Got it? Now here root 3 upon 2 root 2 plus 1 upon root 2 root 2. Base is same and we will get the addition of numerator root 3 plus 1 upon 2 root 2. So this is the value of cos 15, because we don't have the value of cos 15. 15 is not a standard angle, specific angle. Okay, and if you find this value of this cos 15 in the calc, you won't get like this. You will get the value in some point, decimal point. Okay, and if the option is there in this form, so how will you uh, clarify the answer? Okay, that's why you have to know about the formula so that you can find out the answer of the cos 15 in this way also. Understand? Okay, now what is the summary? In this lecture we have seen about the meaning of the word trigonometry, then after that trigonometric ratios, then after that trigonometric functions of specific angles, okay, then after that signs of a trigonometric functions in different quadrants, then fundamental identities, and finally trigonometric functions of a compound angles. Okay, hope you understand all these concepts. Okay, and definitely these all concept will help you to understand the meaning of trigonometry. In the upcoming lectures also I will share some another concept from the trigonometry. Okay, so that they are also helpful to understand the meaning of trigonometry, and it will definitely increase your knowledge about the trigonometry. And once if you understand all these concepts, you so automatically there will be increase in the interest of mathematics, okay, in your mind. Thank you.